working of lead cell. Lead cell जो है, that is a secondary storage cell, which is charged initially and then it is used for getting the electrical energy. So the energy obtained from such a cell is a second hand. That's why it will be called as a secondary storage cell, in which electrical energy is previously stored and then it is used. So that is a secondary storage cell. So when it delivers when electrical energy is obtained from lead cell, that is derived from the cell, when is called as discharging. Discharging matlab it is delivering the electrical energy, or it is used as a source of electricity. And it acts as a galvanic or voltaic cell. At anode, lead get oxidized to Pb plus 2 ions. Lead जो है that will get oxidized to Pb plus 2 ions. This Pb plus 2 ions combines with SO4 di-negative ions from sulfuric acid. Which is used as electrolyte in this cell. That is, initially Pb get oxidized to Pb plus 2 ions, and then this Pb di-positive ions will combine with sulfate ions and it forms PbSO4. So if you add these two, then these Pb di-positive ions will get cancelled. हेलो, हाँ बोला, चालू चल, ठीक, हाँ ठीक है, चल, ठीक ठीक. So this Pb di-positive ion combines with sulfate ions from sulfuric acid and it forms PbSO4. So in short, this will be Pb plus SO4 di-negative is equal to PbSO4 plus 2 electron. So this is what oxidation reaction that takes place at the anode. Now similarly at cathode, what will happen? Now in this case, this Pb get oxidized to Pb di-positive, and this Pb di-positive will utilize the sulfate ions from sulfuric acid and it produces lead sulfate. So this is your oxidation reaction. Now similarly at cathode, what happens? See, at cathode, PbO2 get reduced to Pb plus 2 ions. और ये जो Pb डाई पॉजिटिव आयंस है, दे विल ऑल्सो
combine with sulfate ions form PbSO4. यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हुआ. H positive ions are also utilized and along with that sulfate ions are also consumed. मतलब यहाँ पे दोनों चीजें यूज हो रही है. So in that case, see what happens. This is from electrode. Cathode पे जो Pb positive PbO2 का coating था वो है and it combines with H positive ions from sulfuric acid plus 2 electron, so that you will get these ions. Pb plus 2 ions will be formed. Along with that, twice H2O will be there. Now these Pb dipositive ions again combines with सल्फेट आयन. ये रिएक्शन इसमें भी है, इसमें एट एनोड पर भी होता है, एट कैथोड पर भी होता है एंड इट फॉर्म्स PbSO4. Now these two are added like this. So what happens? See, PbO2 plus 4H positive plus SO4 die negative plus 2 electron. See, complete charge on this side, -2, -2, -4 and +4 will cancel. Now this will be a reduction half cell reaction. पहले आपने जो लिखा था वो ऑक्सीडेशन ये था, PbSO4 का फॉर्मेशन +2 इलेक्ट्रॉन and this is reduction. Now if you add this 1 and 2, this is oxidation reaction at anode. ये नीचे में जो रह गया है वो एनोड पर का रिएक्शन है और वो कैथोड का है रिडक्शन रिएक्शन. Now नेट सेल रिएक्शन क्या होगा? So we have that oxidation reaction, Pb plus SO4 die negative and it forms a PbSO4. That was your oxidation reaction at anode. एक नंबर पे जो लिया था हमने एनोड पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था वो ये था, और रिडक्शन वाला अब लेते हैं PbO2 plus 4H positive plus sulfate ion plus 2 electron. This is cathodic reaction, right? If you add these two, then these electrons get cancelled. One thing. Now left is what? Pb plus PbO2. Now these are 4H positive and 2 sulfate ions, so that will form 4H positive और 2 सल्फेट आयन मिला के बन गया twice H2SO4 and finally what is that? Twice PbSO4 plus H2O. So this will be a redox reaction. So in this reaction you will find that एनोड पर Pb था आपका, कैथोड इज कोटेड विद PbO2, वो दोनों को यूज किया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम. यहाँ पे ये चीज जो है यूटिलाइज हो रही है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ PbSO4. यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो गई. सो इन दैट केस यू विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड इट एक्ट्स एज अ गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल. So shall I write this? मिटाना है ये. Okay. So in all, during these reactions,
electrical energy will be produced, sulfuric acid is consumed, and lead sulfate is formed. When this cell is fully charged, it gives around a 2 volt. So due to continuous use of this cell, sulfuric acid is consumed. So level will go down, and in that case, you have to add the distilled water for further working. Now this is what, when it is used as a source of electrical energy, discharging will take place, and discharging में आपका sulfuric acid consume होगा, lead sulfate बन जाएगा. It needs charging. इसको चार्जिंग करना पड़ेगा. Get reversed. अब क्या होगा? Reaction will be twice PbSO4 plus twice H2O plus H2O is equal to, ये इसको पूरा एग्जैक्ट उल्टा लिखना है, Pb plus PbO2 Pb plus PbO2 plus twice H2SO4. So this is what? Charging. And this one is discharging. So all these reactions are over. यहाँ पे जहाँ डिस्चार्जिंग है वहां पे PbSO4 फॉर्म होता है. जब चार्जिंग होता है तो PbSO4 का डिकम्पोजिशन होके आपको फिर से सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता. कुछ समय बाद में इसका लेवल कम हो जाएगा, एसिडिक लेवल, तो आप इसको डिस्टिल वाटर डाल के मेंटेन कर सकते हैं. Okay, next is your nickel cadmium cell or nickel cadmium battery or a storage cell. It is a secondary cell, dry cell type आता है. And इसमें जो एनोड होगा that will be made up of nickel. एनोड जो है that will be made up of nickel. देखता है.
is a secondary storage cell. Can provide you the 1.4 volt when it is fully charged, which is quite high as compared to that any other cell. ड्यूरेबिलिटी जो है काफी ज्यादा है, so that can be used in electronic watches, कैलकुलेटर्स एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट. ये तीन जगह पे उसको लॉन्गर लाइफ की वजह से वन कैन यूज इट. दिस कैन बी ऑल्सो रिचार्ज. सेकेंडरी है तो दे कैन बी रिचार्ज. कैलकुलेटर्स में यूज कर सकते, वॉचेस में यूज कर सकते. अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज देम इन फोटोग्राफिक इक्विपमेंट. So this will be the application. इसमें जो एनोड है वो आपका कैडमियम मेटल होगा, और जो कैथोड है दैट विल बी निकेल 4 ऑक्साइड और NiO2. ये ऑक्सीडेशन स्टेट है निकेल का. Used as a cathode. Alkaline electrolyte, strongly basic electrolyte, KOH यूज कर सकते हैं. इसमें जो पेस्ट के फॉर्म में होगा, ड्राई सेल बोल रहे हैं आप, तो इसमें कोई लिक्विड हम यूटिलाइज नहीं करने वाले, तो ये इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट ही होगा. तो यहाँ पे कैडमियम जो है दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज वो एनोड करके यूज कर रहे हैं आप. एट एनोड oxidation will take place. At cathode, NiO2 is reduced. NiOH by 2 plus twice OH negative. So this is what oxidation and this one is reduction. If you add them together, then electron cancel हो जाएगा इस तरह से. Then
ये जो OH है ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका. लेफ्ट पार्ट इज कैडमियम सॉलिड प्लस NiO2 प्लस ट्वाइस H2O is equal to NiOH by 2. So in this way cadmium cell is over. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है. Next is your mercury battery. Is it over, Siddesh? Okay. So overall reaction is a redox reaction, and due to this spontaneous redox reaction, this cell can provide you up to 1.4 volt. It can find the applications in electronic watches, calculators and photographic equipments. ये तीन जगह पे इसका काफी longer life होती है. That's why they are used in the form of button cells also. बटन टाइप में होता है. That will be ऐसे एक छोटा सा टिकिया टाइप शॉर्ट की बटन जैसा, पैंट की बटन के जैसा, जिसमें एनोड और कैथोड ऊपर नीचे दिखाई देंगे आपको. Okay, next is your mercury battery. Or you can say the mercury cell. Again, no doubt this is also a secondary one. Which can provide you 1.35 volt which can provide 1.35 volt and used in pacemakers, कान में जो मशीन लगाते हैं, जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो कान में मशीन लगाते हैं, उसके अंदर इस टाइप का सेल यूटिलाइज होता है. दैट इज हियरिंग एड्स एंड इलेक्ट्रिक वॉचेस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक वॉचेस दैट नीड्स अ हायर सप्लाई एंड वहां पे ये सेल फिट करेंगे, वो चार्ज होते रहेंगे एंड दैट विल ऑपरेट योर वॉच. Mercury amalgamated zinc act as a anode. यहाँ पे जो एनोड होगा वो अमलगमेटेड मर्क्यूरी होगा एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड एज ए कैथोड. स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा वही हमको OH नेगेटिव आयंस देगा. प्रीवियस वाले में भी जो इलेक्ट्रोलाइट था दैट वाज अ स्ट्रॉन्गली बेसिक इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड बिकॉज दैट विल प्रोवाइड यू दी OH नेगेटिव आयंस. ये ब्रैकेट में लिखा जिंक अमलगम है, ये मर्क्यूरेटेड जिंक. वॉइस OH नेगेटिव दैट यूज Zn. ठीक है. दूसरा
ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, दैट इज यूज्ड एज ए कैथोड, प्लस H2O plus 2 electron. So this will get cathode. So here mercury जो है that will be reduced. यहाँ पे HgO में वो +2 है, अभी Hg बन जाएगा. So this is what reduction and this one is oxidation. If you add this, then OH negative दोनों साइड में है, then these two electrons get cancelled. So final redox reaction is this is your redox reaction that occurs in case of mercury cells. So where it can be used in hearing aids. कान में जो मशीन लगाते हैं लोग सुनने के लिए, उसमें होता है. Then pacemaker, that is artificial, हम क्या बोलेंगे उसको, इम्प्लांट, IMPLANT, इम्प्लांट मतलब बॉडी के अंदर ऐसा कोई एक मशीन टाइप आपको हार्ट के आसपास फिट करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेसमेकर. एक ऑर्थोवाइस होगा that can be placed within the body and that will regulate the functioning of heart, that is your pacemaker. तो यहाँ पर भी बैटरी की जरूरत पड़ती है, काफी लॉन्गर लाइफ वाली बैटरी लगेगी हमको, and that's why we are using such type of mercury batteries. Okay, one more cell is left and that is your hydrogen oxygen fuel cell.